As you all know, we have already discussed the story of $1,000 by written by O. Henry. Now we will discuss the question answer related to this chapter. First question is, who gave $1,000 to Robert Gillian? Robert Gillian ਨੂੰ $1,000 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? And each of the answer here first. Lawyer Tolman gave money to Robert Gillian. Lawyer Tolman ਨੇ ਜਿਹੜੇ $1,000 ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਬਰਟ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। Who did the money belong to? Money ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਰਟ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ? The money belonged to Gillian's uncle. ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। Why was it given to him? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ? It was given to spend sensibly. ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ and keep the account of each spending. ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। Next, second question is, why was Bobby Gillian not happy with the money given to him? यानी बॉबी गिलियन क्यों खुश नहीं सी जेडे पैसे उन्हें दिते गए सी? Second answer is, Bobby got only $1,000. Bobby ਨੂੰ ਸਿਰਫ $1,000 ਮਿਲੇ ਸੀ and his uncle had left property worth $500,000. और ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ $5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ $1,000 ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। Third question is, what was the condition laid down by the lawyer? ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ? The lawyer told Gillian to spend $1,000 and keep the record of each spending. Lawyers ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ $1,000 ਖਰਚ ਕਰੋ और हर खर्चे का तुसी हिसाब किताब जरूर रखना है। Who else got the money and how much? और किन्नू किन्नू पैसे मिले और किन्ने किन्ने मिले? The butler. Answer is the butler. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ। The housekeeper. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। And Miss Haden. ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਹੇਡਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲ ਰਿੰਗ यानी ਇੱਕ ਮੋਹਰ and $10 each. सबनु $10 और एक मोहर मिली सी। Next, fifth question is, why was old Bryson not serious in giving suggestions to Gillian? ਜਿਹੜੇ old Bryson ਸੀ ਬੁੱਢਾ Bryson ਸੀ और Gillian ਨੂੰ suggestion ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? Answer is, old Bryson was not serious in giving suggestions because ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਬ੍ਰਾਈਸਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ he did not like Gillian. ਉਹ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। He suggested, what were the suggestions given? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ? He suggested that Gillian could buy a small house. Gillian ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। Buy milk for 100 babies ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ। Spend half an hour in art gallery ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट। Spend on baby boys education ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ $1,000 किसी मुंडे दे पढ़ाई पे खर्च कर दे और बाय अ डायमंड पेंडेंट फॉर मिस लॉटा लॉरियर या फिर मत सॉरी ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਲੋਟਾ ਲੌਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁੰਮਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच वन डिड गिलियन एक्सेप्ट? ਹੁਣ ओल्ड ब्राइसन ने कई सुझाव देते हैं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਅਸੈਪਟ ਮੀਨਸ ਮੰਨਣਾ ਗਿਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। what did he do then? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਿਲੀਅਨ accepted to buy diamond pendant for Miss Lota। ਗਿਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ?
उन्होंने ये सुझाव नूं मान लिया कि वो जड़े मिस लोटा नूं एक सोने की झुमकी खरीद के दे देंगे। ही टुक अ कैब, फिर उस तो बाद गिलियन ने कैब ली, एक टैक्सी ली एंड वेंट टू कोलंबाइन थिएटर, और वो कोलंबाइन थिएटर च चले गए क्योंकि उत्थे ही मिस लोटा लॉरियर काम करती सी। सेवेंथ क्वेश्चन इज हु वाज मिस लोटा लॉरियर? मिस लोटा लॉरियर कौन सी है? मिस लोटा लॉरियर वाज अ थिएटर आर्टिस्ट। मिस लोटा लॉरियर कौन सी? एक थिएटर च काम करने वाली कलाकार सी। डिड शी वेलकम गिलियंस कमिंग? कि उन्होंने गिलियन का आना चंगा लगे, उन्होंने स्वागत किया? नो, शी डिड नॉट वेलकम गिलियंस कमिंग, उन्होंने गिलियन का आना उन्हें स्वागत नहीं किया। वाज शी हैप्पी विद हिज ऑफर? कि उन्होंने गिलियन की जड़ा गिलियन ने उन्होंने पेशकारी की सी कि भी मैं तेन डायमंड पेंडेंट लैके दे सकना, कि उन्होंने उस तो खुश सी? नो, शी वाज नॉट हैप्पी विद हिज ऑफर। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, दसो कि क्यों खुश नहीं सी? She was not happy with his offer because she wanted costlier one। ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ गिलियन ने उन्होंने पेशकारी की सी कि $1000 का तेन डायमंड पेंडेंट लैके दे देना, वो इस वास्ते खुश नहीं सी क्योंकि वो उस तो महंगा, कॉस्टलीयर नहीं, उस तो महंगा चाहती सी। 8th क्वेश्चन इज व्हाट डिड गिलियन आस्क द ड्राइवर ऑफ द कैब? गिलियन ने ड्राइवर जड़ा कैब का जी उन्होंने टैक्सी का चालक सीगा उस तो की पूछा? He asked the driver of the cab what he would do if he had $1000। उन्होंने जड़े टैक्सी का चालक सी उस तो पूछा कि वो की करेगा अगर उहदे कोल $1000 होण। How did he like his answer? कि गिलियन नूं उहदा उत्तर पसंद आया? No। How do you know? तुहानूं किवें पता? गिलियन did not like his answer, गिलियन नूं उहदा उत्तर बिल्कुल अच्छा नहीं लग्या। किवें हो तुहानूं पता लग्या? क्योंकि गिलियन ने सुनदे सार फटाफट क्या, बिकॉज ही सेड oh no, ना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who did गिलियन go? नेक्स्ट, गिलियन टॉक्ड टू अ ब्लाइंड पेंसिल सेलर। गिलियन ने उस तो बाद किदे नाल गल कीती? गिलियन टॉक्ड टू अ ब्लाइंड पेंसिल सेलर। गिलियन ने एक अन्य जड़े पेंसिल बेचन वाले नाल गल कीती। क्यों कीती? वाई? बिकॉज ही वांटेड टू नो हाउ टू स्पेंड $1000, क्योंकि वो जानना चाहते सी कि $1000 वो किवें खर्च करन। Next, 11th question is why did Gillian give his money to Miss Hayden? गिलियन ने अपने जड़े पैसे सी सारे वो हेडन नूं क्यों दिते? क्योंकि गिलियन गेव मनी टू मिस हेडन, गिलियन ने मिस हेडन नूं पैसे इस वास्ते दिते बिकॉज ही लव्ड हर, क्योंकि वो उन्हों बहुत प्यार करते सी। What did he ask her to give him? उन्होंने उसनूं की किया कि उन्हों की देवे? वो मिस हेडन को जो गए थे उन्होंने की किया कि उन्होंने की देन और क्यों कहा? He asked her to give him a piece of paper। उन्होंने उसनूं किया कि वो गिलियन नूं एक कागज का टुकड़ा देन to write a note, ताकि ओदे उत्ते गिलियन कुछ लिख सकन। 12th question is what did Robert Gillian write in his note? 12वां क्वेश्चन है रॉबर्ट गिलियन ने अपने उस नोट च की लिखा? आंसर इज he wrote paid by Robert Gillian। उन्होंने लिखा रॉबर्ट गिलियन द्वारा जड़े पे कर दिते गए, भुगतान किए गए $1000 किनू? टू द बेस्ट एंड डेयरेस्ट वुमन ऑन दिस अर्थ। इस धरती दे उत्ते सब तो वधिया और सब तो प्रिय औरत नूं। 13th question is why did Gillian go to the lawyers again? गिलियन दोबारा क्यों गए सी लॉयर्स को, वकीलों को ले? आंसर इज गिलियन went to give the account of spending of $1000 to the lawyers। गिलियन $1000 दे खर्चे दा लेखा जोखा देन, हिसाब देन वकीलों को ले गए सी। Next, 14th question is what had Gillian uncle written in postscript of his will? पोस्टस्क्रिप्ट हुंदा बेटा बाद वाली, यानी गिलियन दे अंकल ने बाद वाली अपनी वसीयत की लिखा सी। इन्नी की वसीयत उन्होंने पता सी कि $1000 मैनू मिले हैं, तो उस तो बाद वाली वसीयत की लिखा सी अंकल ने
he had written, उन्होंने लिखा सी, if Gillian would spend the money wisely, अगर गिलियन पैसे ਨੂੰ बड़े ध्यान ਨਾਲ समझदारी ਨਾਲ, wisely में समझदारी ਨਾਲ खर्च करेगा, he would be given $5,000, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $5,000 गिलियन ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, otherwise the money would go to Miss Hazel, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਚਾਚਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ $5,000 ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। Now 15th question is, why did Gillian not get the rest of the money? Gillian ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ $1,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $5,000 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? Gillian did not get the rest of the money. Gillian ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ नहीं मिले because क्योंकि he told a lie, क्योंकि उन्हें झूठ बोल दिता that he had spent money on races, उन्होंने जेडे पैसे हैं वो हॉर्स रेसेस जेडे बेटे सट्टा लगाते हैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚ ਕਰਤੇ हैं, मतलब वो मनी ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚ नहीं ਕੀਤੀ। was he sorry for his action, कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, he was not sorry for his action because he knew it very well, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ now the money would go to Miss Hazen, कि ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਸ ਹੇਡਨ ਨੂੰ $5,000 ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। So here beta ends the question answer of this chapter. Thank you beta.